Welcome back to Psychology with Soumya. In today's class, we will be discussing Gestalt School of Psychology. The Gestalt School of Psychology, it emerged in Germany. It was a reaction against structuralism and elementism. How do we understand it? Because the Gestalt theory says, the Gestalt school says that whole is greater than the sum of its parts. Parts means elements, components. Elements and components we talked about in structuralism, elementism, atomism, reductionism, right? So this was discussed in structuralism, whereas Gestalt opposes structuralism, and it says that whenever we want to understand anything, we have to understand it as an organized whole, right? Because whole is greater than sum of its parts. Before that, let us just look at these points. Behaviorism and functionalism are the concepts which started in America. Functionalism is William James. William James is father of American psychology, so that started in America. Watson is from America, behaviorism. Gestalt is Germany. Structuralism is by Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt is he set up his experimental psychology lab in Leipzig, Germany. So by that, we understand that structuralism by Wilhelm Wundt is also from Germany. Gestalt is also from Germany, right? Gestalt is by Max Wertheimer. Behaviorism क्यों आया? Behaviorism came against structuralism and functionalism both, right? First school is structuralism, उसके बाद functionalism आया. Structuralism, functionalism दोनों के against में आया. Third school behaviorism. Now the fourth school, which is Gestalt school was it is completely against only structuralism, right? Because Gestalt ka meaning है whole, and structuralism is all about is all about dealing with components, elements of mind and consciousness. So the Gestalt school, So the Gestalt psychologists, they argued that psychological phenomenon cannot be fully understood if we break them into small parts. So understanding them wholly, right? It is important to understand experience. So that is why the whole is greater than the sum of its parts. Gestalt School of Psychology was founded by Max Wertheimer, who is from Germany. This idea or the school was further worked upon by Kohler and Kafka. Kohler, so all of their work, it focused mainly on perception, right? You have to understand this perceptual organization, how human beings perceive things, that is by organizing the sensory information into meaningful patterns, right? So that is why it is called as perceptual organization, is the main important thing of Gestalt psychologists, right? So ये start कैसे हुआ? How did Gestalt School of Psychology it started? Right, it was started by Max Wertheimer. तो Max Wertheimer ने कैसे start किया Gestalt School? So Max Wertheimer, he was doing a research on 5 phenomenon. Right, what is 5 phenomenon? 5 phenomenon में he was showing that when 2 lights, they flash in quick succession, one after the other, 2 lights flash, then people perceive them as a continuous motion. Right, they do not see that there are 2 separate lights. They see it as one light. They perceive it as one light rather than perceiving it as separate stimuli. So this discovery of 5 phenomenon by Max Wertheimer, this led him to find the Gestalt School of Psychology, which involves that perceptual organization is the core idea, and it involves active mental organization rather than simple accumulation of sensory elements. Right? हम क्या करते हैं? Actively we are organizing, right? We are not just accumulating the sensory information, we are organizing. So and next, ये जो tendency है to organize things, to view things as an organized whole, this is an inherent tendency. This is not learned or anything, it's an inherent tendency. This is what they told is also important. ठीक है? ये perceiving as organized whole is what type of tendency? It is inherent tendency. It follows certain principles, certain laws. Those are known as laws of Gestalt perception.
So we will deal with the laws in detail, such as the law of proximity, the law of similarity, the law of closure, the law of Pragnaz, the law of continuity. There are certain laws. Okay, we will see them with examples, but see, just try to understand that when we are, there are certain elements, there are certain things we are seeing. जब हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं. हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली क्या करता है, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉज, एंड फिर हम उसको एक कंप्लीटली हम उसको देखते हैं, उसको पार्ट्स में नहीं देखते हैं, राइट. Then after Max Wertheimer, certain significant contributions were made also by Kohler. कोलर का फेमस क्या है, द चिंपैंजीज एक्सपेरिमेंट. सो चिंपैंजीज एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, व्हाट वाज द एंड रिजल्ट, कि हमने देखा कि कोई जो प्रॉब्लम हमने चिंपैंजीज के सामने दिया था, दे सॉल्व इट थ्रू इनसाइट लर्निंग, दे सॉल्व इट थ्रू दे सॉल्व दैट प्रॉब्लम, द चिंपैंजीज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन, right? They did not solve that problem through gradual process or through trial and error. Nahi, suddenly they got an insight and they solved the problem, right? So this thing challenged, so this was a challenge against behaviorism. Behaviorism क्या बोलता है कि we learn things like step by step, conditioning होता है, ठीक है, फिर हम देखते हैं. दिस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ योर डॉग वाला एक्सपेरिमेंट बाय पावलोव, right? Chimpanzee experiment, but the chimpanzee solved the problem by insight, right? Not by gradual trial and error, right? Suddenly they solved. But in this one we saw that in the dog wala experiment, which is there in behaviorism, we saw that they solved the problem by gradual conditioning. So these are two opposite theories, Gestalt and behaviorism, right? Completely opposite. The Gestalt approach, it influenced further developments in like cognitive psychology, perception, social psychology. It influenced the works that were done in these fields. It helped also the researchers to understand how people perceive patterns, right? How do they interpret visual information? How do they organize stimuli? And they told that it is important to understand the context and organization of experiences. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो if we summarize, what we will say, that Gestalt school of psychology, it focused, did it consider the mind? Yes, it considered the mind. It told that the mind has an active role to play, right? The mental processes, active mental processes, they organize the stimuli, they organize wholes rather than collection of elements. There is an active role of the mind. Perceptual organization, insight learning is all in Gestalt school of psychology. So let us do a quick recap. Who are the founders? Max Wertheimer. After he studied five phenomenon, it inspired him to consider the fact that the whole is greater than the sum of its parts. Further work was done by Kohler chimpanzee experiment, insight learning, and Kafka, right? Core assumptions are any psychological phenomenon should be studied as organized wholes. परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड, इट इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज ऑलवेज पैटर्न्ड, राइट? कुछ भी हम परसीव करते हैं, जो भी परसेप्शन है हमारा, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड पैटर्न्ड. माइंड क्या करता है? एक्टिवली ऑर्गेनाइजेस सेंसरी इनपुट, ठीक है, कुछ भी सेंसरी इनपुट है, माइंड इज एन एक्टिव रोल. लर्निंग अकर्स थ्रू इनसाइट, नॉट जस्ट ट्रायल एंड एरर. लर्निंग जो है इनसाइट से आता है, ट्रायल एंड एरर से नहीं आता. So Gestalt psychology, it began with Wertheimer's study of the five phenomenon, right? Five phenomenon में apparent जो movement आया, and then he showed that emotion का जो perception है, it cannot be reduced to simple sensory elements. It has to be experienced in a whole. ठीक है, वो जो lights को हम separately नहीं experience कर सकते, उसको whole में ही उसको perceive करना है. Now let us look at the laws of perceptual organization. First, let us look at the law of Pragnaz. The law of Pragnaz is also called as the law of good form. इसका मीनिंग है, we perceive information in the simplest, in the most stable and in the most organized form possible. Law of Pragnaz क्या बोलता है? Other name is law of good form. What is that good form? That whenever we perceive anything, we perceive it in the simplest, most stable and most organized form, right? एक particular, for example, Olympic logo है. ओलंपिक लोगो में हम 5 सर्कल्स देखते हैं, हम उसमें कर्व्ड लाइंस नहीं देखते हैं, ठीक है. नो डाउट द सर्कल्स आर मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइंस, बट डू वी सी द कर्व्ड लाइंस? नो. व्हाट इज सिंपल फॉर अस टू सी? वी सी द सिंपलेस्ट फॉर्म इज द सर्कल, right? So we see it in the simplest form, that there are 5 circles,
राइट, एंड दिस इज द सेंट्रल जेस्टल्ट प्रिंसिपल, ठीक है. सेंट्रल लॉ, बहुत सारे लॉज हैं, बट द सेंट्रल लॉ और द मोस्ट फंडामेंटल लॉ इज द लॉ ऑफ प्रैग्नेंस और लॉ ऑफ गुड फॉर्म. लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ऑब्जेक्ट्स विच आर क्लोज टू ईच अदर दे विल बी परसीव्ड एज अ ग्रुप. यहाँ पे 3 डॉट का हम एक ग्रुप देख रहे हैं और 3 डॉट का और एक ग्रुप देख रहे हैं. वी डू नॉट सी इट एज 6 सेपरेट डॉट्स, राइट. दिस इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी जो क्लोज है वो एक ग्रुप है. सिमिलैरिटी, जो चीज़ें सिमिलर हैं वो एक ग्रुप हैं. सिमिलरिटी कैसे हो सकता है? जो सिमिलर हैं कलर में, शेप में, साइज में, टेक्सचर में, ठीक है. तो जो भी चीज़ें सिमिलर हैं वो एक ग्रुप है. लॉ ऑफ क्लोजर क्या है? हम मिसिंग पार्ट्स को फिल करते हैं टू परसीव अ कंप्लीट होल, ठीक है. अ ब्रोकन सर्कल इज स्टिल सीन एज फुल सर्कल. एक ब्रोकन सर्कल है तो तब हमें क्या लगता है, अच्छा ये एक फुल सर्कल का पार्ट है, ठीक है. वी ट्राई टू फिल इन द मिसिंग पार्ट, फिल इन द ब्रोकन सर्कल एंड मेक इट एज अ कंप्लीट सर्कल. सो माइंड व्हाट इट डज, इट ऑटोमेटिकली इट फिल्स इन द गैप्स. लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. व्हाट डज इट से कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं हम उसको स्मूथ और कंटिन्यूस फॉर्म में देखते हैं. मतलब मे बी वो बहुत ज़्यादा देर आर एब्रप्ट चेंजेस और समथिंग, बट हम जिस पोर्शन को देखते हैं तब तक इट बिकम्स वेरी स्मूथ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट वी सी दैम एज कंटिन्यूस लाइन्स. हम उनमें एंगल्स नहीं देखते हैं, हम उनको कंटिन्यूस लाइन्स की तरह ही देखते हैं. हम उनको सेपरेट करके ये नहीं बोलते देखो ये 4 एंगल्स हैं, हम बोलते हैं ये देखो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ये एंगल्स तो बाद में बन रहा है, बट एंगल्स इज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड, राइट. नेक्स्ट इज द फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल. फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल मतलब हम सेपरेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड, ठीक है. हमें ऑब्जेक्ट्स बैकग्राउंड से अलग दिखते हैं. लॉ ऑफ कॉमन फेट. कॉमन फेट, फेट मीन्स डायरेक्शन. अगर चीज़ें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है वी ग्रुप देम एज वन थिंग, ठीक है. बर्ड्स विच आर फ्लाइंग टुगेदर दे आर सीन एज वन यूनिट. सो प्रैग्नेंस जो है, लॉ ऑफ प्रैग्नेंस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड इज द सेंट्रल प्रिंसिपल. दीज लॉज डिस्क्राइब परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, बट दिस लॉज दे डू नॉट डिस्क्राइब लर्निंग. जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लॉज है. दिस इज द जेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. लर्निंग के लॉज नहीं है ये, ठीक है. जेस्टाल्ट साइकोलॉजी ऑपोजेस एलिमेंटिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, राइट, एंड ऑल्सो बिहेवियरिज्म, राइट. नेक्स्ट लेट अस लुक एट व्हाट इज इनसाइट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग किसके एक्सपेरिमेंट से आया? कॉलर के एक्सपेरिमेंट से, विच वॉज डन ऑन चिंपैंजीज, राइट. सडन उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो किया इट वॉज सडन, right. It was not through trial and error, it was not gradual, it was sudden, meaningful and not gradual trial and error. रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म में हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं माइंड, थॉट्स, कॉन्शियसनेस को इनटू पार्ट्स, बट इट सेज नो. एक्सपीरियंस जो है वी हैव टू स्टडी इट एज अ होल. एलिमेंटिज्म आर्टिफिशियल होता है. सो इट स्टार्टेड इन जर्मनी बाय वर्थहाइमर. इट इज़ एंटी एलिमेंटिज्म. It is holistic. It emphasizes on perception, organization, problem solving. It influenced cognitive psychology. Max Wertheimer believed in the molar processing or behavior. ठीक है, molar processing of behavior.